Today we are going to discuss paper 1-2 of May June 2021 और पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे. Please keep this thing in your mind that we are not allowed to use the calculator. So calculator must not be used in this paper. Now let's move on to the question number 1. It's 80 marks paper. Question number 1. Write 0.45 as a fraction in its lowest form. So as we can see that 0.45 will be equals to, this will be equals to 45 divided by 100, because if we remove this decimal we have to put 1 over here. Now further we can simplify it as 5 9s are 45 and 5 20s are 100. So the final answer will be 9 over 20. Let's see the part B. Write these fractions in order of size, starting with the smallest one. Now the very basic way, the very simple way is that we have to multiply it with so that the denominator must be same. So अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करें तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा. सो दिस विल बी, इसको 20 बनाना है सबको, तो 5 4 ज़ा 20, सो 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. सो दिस विल बी 16 by 20. दिस विल बी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 14 by 20 एंड दिस विल बी 17 by 20. तो अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि सबसे सिंपल वाला कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7s and 10s. So 7 by 10, then this will be equals to 4 by 5. So 4 by 5 ये सेकेंड है, and the last one will be 17 by 20. तो इस ऑर्डर में हमने सिंप्लीफाई किया, बिकॉज तीनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये सिंपल वन आ गया. नाउ कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच शेप. अब सिमेट्री क्या है आपके पास, सिमेट्री देखें तो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी बन रही है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री 1. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. This will be the first line of symmetry, this will be the second, and this will be the third. It's not appropriate, but the line of, we will have 3 lines of symmetry for this one, and the order for this one will also be 3, because order का ये था कि आप 360 डिग्री पे रोटेट करते थे और कितनी दफ़ा आपकी ये जो शेप है ये आपके पास सेम शेप बनती है, इसको आप लिख देते थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास कितनी बन रही है, कोई नहीं बन रही, बिकॉज अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये एक्यूरेट शेप नहीं बनती. अगर आप यहाँ सिमेट्री मीन्स कि अगर ये बॉक्स आपके पास यहाँ होता फिर आप लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते थे, बट इसमें 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास तो है, बिकॉज आप इसी शेप को जब रोटेट करेंगे 360 डिग्री तो एक आपके पास इस पॉइंट पे आएगा और सेकंड दोबारा रोटेट करेंगे तो इस पॉइंट पे आपके पास बनेगा. तो रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 है और लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी आपके पास 0 है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. For question number 3, first of all, what we have to do is we have to add it. So if we add these 3 numbers, 20 to 25 into 15, so this will be 60. Now the next step is, if we want to find out the angle, what we have to do, 20 divided by 60 multiply by 360. So this will be 61, and then this will be equals to 66. So this will be 20 into 60 is 120. Then the next one,
25 divided by total multiply by 360. 360 इसलिए because हम एंगल फाइंड कर रहे हैं. So again 0 0 से cancel out. 6 1 are 6 6 are, so 25 into 6 will be equals to 150. Now for the last one, this will be 15 divided by 60 multiply by 360. So 0 0 se cancel, 6 1s are 6 6 are, so 15 into 6 will be equals to 90. Now what does it mean? We can see that this angle will be of 120. Now the next one should be equals to 150. So this will be the portion for the banana, and the angle for this should be 150, and the last one will be equals to, the angle must be of 90 degree. You can use the D को यूज करके आप ये एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. So this portion will represent the oranges. Now let's move. I think the concept is clear. Let's move on to the next question. Question number 4. Now write into the correct nearest million. So for nearest million, if we correct it, so this will be equals to, इसको round off करें तो nearest million will be equals to, अब ये देखें 64785,790. So this will be equals to 65 and then 6 zeros. So we have to be very careful about this thing, that तीन digits के लिए ये 0 है, and then the next one for next 3 for the 491. Question number B, question number 4 part B. Correct to, now please, this is a very important point that हमने question को carefully पढ़ना है. By reading each number correct to one significant figure, estimate the value. So इसमें अब estimate करना है हमने. So first of all 67.8 will be equals to 60, because हम इसको correct to one significant figure हमारा keyword है. Estimate the value plus 49.5 will be equals to 50 divided by, now 0.187 correct to one significant figure means this should be equal to 0.2. So now 0.2 whole square means that 0.2 multiplied by 0.2, so this will be equals to 4, and as we can see that we will have two decimal places, so 4 0.0, so which means that this will be equals to so there is a small correction over here. So this should be equals to 70, because round off कर रहे हैं तो 67.8 को जब round off one significant figure करेंगे तो ये already इसको क्या कर देगा 68.0, and then इसको further one significant figure पे करेंगे, so this will be equals to 70.0, so this should be 70. So 70 plus 50 will be equals to 120 divided by 0.04. Now इसको हम further simplify कर सकते हैं like this, 120 divided by, मैं steps थोड़े ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको clarity रहे, इसमें confusion ना रहे. So this will be equal, we can write it as 120 divided by 4 divided by 100, because इसको हम decimal से fraction में convert कर रहे हैं ताकि calculation without calculator हम कर सकें. So 120 multiply by 100 by 4 ones are for this thing, so the final answer will be equals to 3000. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next question. Question number 5. Umar and Jamil shares 540 in the ratio of 7:2. Work out the Umar's ratio. So we have to see this thing that the keyword Umar is at the first place, so iski ratio bhi 7 hoga. So what we have to do is 7 divided by 9
9 इसलिए बिकॉज सम ऑफ द रेशियोज करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय टोटल 540, इसको सिंप्लीफाई करें, सो 9 1s are 9 and then 9 9 6 54, so 7 into 60, so 7 into 60, let's see this thing, 7 into 60, 7 zeros are 0, 7 6 are 42, so 420 will be the final answer. Now let's move on to the next part. Increase 40 in the ratio 5:8. Now what does this mean? Increase 40 in the ratio 5:8 means that 40 is equals to 5, 40 by x. So इसका मतलब ये है कि ये हम रेशो को यूज़ कर रहे हैं, 40 बाय x की जो रेशो है वो 5:8 के इक्वल है, तो इसको रीअरेंज करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, x will be equals to 40 into 8 divided by 5, so 5 1s are 5 and 5 8s are 40, so x will be equals to 64, so 64 will be the final answer. Let's move on to the next question. Next question number 6. Now question number 6 is the base of a cuboid is a square with side length 4 cm. The volume of the cuboid is this. So first of all the keyword is cuboid. अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या है? वॉल्यूम की शेप का, सारी शेप्स का फार्मूला वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट. कोई भी शेप आपके पास 3D की होगी तो बेस एरिया इनटू हाइट. अब इस केस में आपके पास जो बेस है वो क्या है? क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का मतलब ये कि बेस इज अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 48, so 48 is equals to length is 4, so length is 4, as we can see that it is a square, so square का मतलब ये है कि width भी 4 है और height हमने फाइंड करनी है, so width is also 4 and we have to find the height, so 48 divided by 16 is equals to height, so finally height will be equals to 3 because 16 1s are 16 3s are. So अब height हमारे पास 3 है, which means that we can easily draw it over here. So as we can see that the height is 3, so we have to move 3 boxes to each side. This is not an appropriate line, but I hope कि आपको इसका solution clear हो रहा होगा. This should be yes. Now this will be the height and this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next question. Question number 7. A bag contains colored counter. A counter is taken from the bag at the random. The table shows the probability of taking a counter of each color. Now, as we can see that sum of all the probabilities will be equals to 1. So which means that if we add these three, let's say this is x, so x will be equals to 1 minus 0.15 plus 0.3 plus 0.42. As we are not allowed to use the calculator, so we have to show our working over here. So 0.15, 0.3, so and then 0.42.
2। इसको मैं थोड़ा और अप्रोप्रिएट लिख लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इसको सिंपली ऐड करें, 5 और 2 को ऐड करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 एंड देन 4 3 6 7 और 8 तो 0.87। So 0.87, so x will be equals to 1 minus 0.87, so 1.0 और 0.87 इसको आप सब्ट्रैक्ट करें अगर, so this will be equals to 0.13। खैर डायरेक्टली भी पता चल रहा है आपको, यहाँ से कैरी लिया, ये 1 हो गया एंड देन 10 minus, so this will be 3, 9 8, so 1, so 0.13, so x will be equals to 0.13, so we don't need to write x over here, ये सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे थे, so 0.13 will be the final answer. Let's move on to the next one. Work out and give your answer as a fraction. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कीवर्ड्स को आपने ज़रूर हाईलाइट करना है और फिर आपने कमांड वर्ड्स को भी हाईलाइट करना है, मीन्स कि आपको पता हो कि इसमें हमने करना क्या है। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ कमांड वर्ड। कमांड वर्ड के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क आउट। सो 5 3 15 प्लस 2 17 by 5 minus 4 1 4 plus 3 is 7 by 4। अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 4 by 4 देन 5 by 5, so this will be equals to 20 minus 20। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 7 5 35 और यहाँ पे 4 into 17 है, 4 into 17 17 and 4, 7 4s are 28, 4 1s are 4 and 6 so 68। now this will be equals to 20 68 minus 35, so let's see 68 minus 35, so this will be 3 and this will be 3, final answer will be equals to 33 by 20। I hope that the concept is clear. Let's move on to the next question. Question number 9. The sketch shows the position of 3 villages A, B, and C. A is due east of B. Okay. This is, you can see use a ruler and a compass only. ये आपके पास क्या है, कमांड वर्ड है। यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। अब आप इसमें ये चीज़ देखें कि 9 किलोमीटर का मतलब क्या है, 9 किलोमीटर का मतलब ये है कि 9 सेंटीमीटर। 8 किलोमीटर का क्या मतलब है, 5 किलोमीटर का क्या मतलब है। अब हम इस डायग्राम को अगर कंप्लीट करें तो इसको अगर आप मेजर भी करेंगे तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, बिकॉज ए बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 9 किलोमीटर है, विच मीन्स 9 सेंटीमीटर। अब देखें सबसे पहले कि 5 किलोमीटर की लेंथ है, इट मीन्स कि आपने कंपास को 5 किलोमीटर पे ओपन करना है। इस क्वेश्चन में अब आपको मैं जस्ट रफ सा एक आइडिया दूंगा कि ए टू सी की लेंथ आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, कि अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर की लेंथ पे ओपन करके एक आर्क आपने ऐसे लगानी है, प्रॉपर आर्क नहीं है तो कंपास को ओपन करके एक आर्क आपने इस साइड पे ये लगा दी। देन बी टू सी की लेंथ देखें कितनी है, 8 किलोमीटर। सो कंपास को 8 किलोमीटर पे ओपन करके पॉइंट बी पे रखना है और एक आर्क इस तरह ड्रॉ करनी है। अब जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, वो उसको आपने ड्रॉ कर देना है। दिस इज पॉइंट सी एंड द लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, दिस लेंथ शुड बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। नाउ इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपने ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है ये कंपास को यूज़ करके
ड्रॉ करनी है, मीन्स कि ये आर्क आपने अपनी वर्किंग में शो करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. Let's move on to the next one. Measure the bearing of C from B. Now C from B, what does it mean? From B means that B पे आपने नॉर्थ को ड्रॉ करना है और आपका जो आंसर होगा, जो एंगल होगा रिक्वायर्ड, वो ये कंप्लीट होगा. आप D को रखें, D को आप यहाँ रख के आप अपने पूरे जो एंगल है इसको मेजर करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्रीज. Let's move on to the next question. Question number 10. Now write is the keyword, 270 as the product of its prime factors. Product of its prime factors में आपने इसको show कर रहा है. Now for this one, what we have to do, we have to simply take the LCM. इस तरह के questions आपको आएंगे, इसमें आपने product find करना होगा prime factors का. So 270. So we will use the prime numbers. 2 1s are 2, 2 3s are 6, and 2 5s are 70. Then we can use the number 3. So 3 4s are 12, and then 3 5s are 15. Then we again use 3. So 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Now we can again use 3. So 3 5s are 15, and then 5 1s are 5. So this will be equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So now from here we can see that we can write these three as 3 cube multiplied by 5. So this will be the final answer. Please keep this thing in your mind that you have to show your working. कि जब आप LCM ले रहे हो ये सारी वर्किंग आपने शो करनी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 270 एंड 225. 270 को तो आप ऑलरेडी फैक्टराइज, बाय द वे अगर इसमें हमने फैक्टराइज ना किया होता तो आप दोनों का एक साथ LCM लेते, बट यहाँ पे आप देखें. सो 270 के आपके पास फैक्टर्स क्या हैं? 270 के आपके पास फैक्टर्स हैं 2 प्लस, बल्कि एक साथ इनको फैक्टराइज कर दे, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन में इस तरह होगा कि आपको ये फाइंड नहीं किया होगा. तो इस तरह के केस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में आपने क्या करना है, दोनों के एक साथ फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. सो 270 एंड द अदर वन इज 225. नाउ वी कैन सी कि दोनों 2 के टेबल में तो नहीं आते, बिकॉज ये 225 नहीं आता. तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 9s are 27 and then 0, and then 225 के लिए देखें तो 3 7s are 21, 3 5s are. Now further we can simplify it as 3. So 3 3s are, and this will be equal to 3 2s are 6, 3 5s are 25. अब 3 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो हम 4 is not a prime number. 4 के टेबल में भी खैर नहीं आता ये, लेकिन हम 5 पे जाते हैं. 5 6 are 30 and 5 5 are 25. देन अब इससे आगे देखें तो हम इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता, बिकॉज आगे अगर हम करेंगे भी तो 5 और 6 को एक होगा और सेकेंड नहीं होगा, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते. तो दैट इज वाई द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में आपने ये देखना है कि इस स्टेज पे आपने जाके रुक जाना है, यहाँ से आगे आपने LCM इसका नहीं लेना. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So 3 3 5 3 is 15. So this will be equals to 45. So 45 will be the final answer. और मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने फाइनल आंसर को इस स्पेस में लिखें. अपनी वर्किंग को साइड पे करें. मैं स्पेस ताकि ज़्यादा ले रहा हूँ, इस वजह से मैं वर्किंग इस तरफ शो करूँ, और कोशिश करें कि अपने फाइनल आंसर को इस स्पेस में लिखें आप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11. सॉल्व. नाउ द कीवर्ड इज
solve the simultaneous equation and show your working. Now show your working means कि आपके पास ये क्या है, कमांड वर्ड है इसमें. अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी. तो हम इसको यूज़ करते हैं. लेट्स से इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 3. सो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14. और ये इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 18 टू द 36. ओके, अब हम इसको एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. सो ऐड करने में हमें साइन चेंज नहीं करने. हाँ, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता फिर साइन चेंज करते, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है. तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इनको ऐड करें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 19x इज इक्वल्स टू 14 into 30, 14 plus 36. No, this should not be 14. इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21. So 21 plus 36 will be equals to 7 and 5 57. So x will be equals to 57 by 19. So x will be equals to 19 1 ज़ा 19 3 ज़ा. So x will be equals to 3. Now इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें. लेट्स सपोज हम सेकंड में पुट करते हैं. 2 into 3 minus 3y is equals to 18. So 6 minus 18 is equals to 3y. Or then this will be minus 12 is equals to 3y. And finally y will be equals to minus 12 by 3, and then y will be equals to minus 4. और x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 and y की वैल्यू आपके पास क्या है minus 4. Let's move on to the next question. Question number 12. First of all, we can see the key points that the distance, it is the distance time graph, shows her journey. Calculate is a command word. Average speed in kilometers per hour for the whole journey. So now for the whole journey है, तो इसलिए हम we can use the total distance divided by total time. So here we can see that the total distance is 24. So s will be equals to total distance divided by total time. So this will be equal, total distance is 24. टोटल टाइम अब क्या लेंगे, टोटल टाइम 10 o'clock स्टार्ट हो रहा है और 11:30 तक. इट मीन्स 1.5 आवर्स हैं ये. सो 24 डिवाइडेड बाय 1.5. सो वी कैन फर्दर राइट इट एज, इस पे ये यूज़ कर सकता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 15 by 10 and 24 multiply by 10 by 15. तो ये क्या हो गया आपको 240 divided by 15. So 240 divided by 15 will be the final answer. इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से, या हम डायरेक्टली 5 के टेबल से ही सिंप्लीफाई करें. सो 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 8s are, and then 3 1s are, or 3 16s are. So 16 kilometers per hour will be the final answer. Let's move on to the next one. A car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds. It then decelerates. डिसेलरेट्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर आवर्स
until it stops. It stops का मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, फाइनल स्पीड जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हमने बनाना है इसका। फर्स्ट 80 सेकेंड के लिए तो उन्होंने कहा है कि 10 मीटर्स पर सेकेंड है, so this will be equals to from here till here, so this will be a straight line. Then for the next one, then it decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second. इसका मतलब ये है कि हमें acceleration पता है, acceleration will be equals to change in velocity divided by time. So time हमें नहीं पता, acceleration हमें पता है, so we can rearrange it. So change in velocity will be equals to Vf minus Vi divided by A. So अब Vf will be equals to what? This will be equals to Vf will be equals to 0 and Vi will be equals to 10 meters per second, because यहाँ से आपको पता चल रहा है हम इस ग्राफ, इस पॉइंट से आगे का ग्राफ बना रहे हैं. So T will be equals to 0 minus 10 divided by, because यहाँ से हम देख रहे हैं ना कि Vf is equals to 0, Vi is equals to 10 and acceleration is equals to negative 0.5. So T will be equals to negative 10 over negative 0.5, negative 0.5. So time will be equals to 10 by 0.5, which will be equals to 20 seconds. So 20 seconds का मतलब ये है कि for the next 20 seconds means के from 80 to 100 it will decelerate. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next question, question number 13. Now in question number 13, the first part is write 0.00053 in standard form. So standard form में what we have to do, we have to shift decimal to 1, 2, 3, 4 and 5. So this will be equals to 5.3 multiplied by, as we are moving towards the left side, so this will be negative 5. This will be the final answer. Let's move to the part B, 1.5. Now here we can see that this is the multiply sign. So it means that 1.5 multiplied by 8 multiplied by 10 raised to power 14 multiplied by 10 raised to power 6. So here we can see that the base is same. So we can multiply it here. So power will be added. So 10 raised to power 20. Okay, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 8 5s are 40, 8 1s are 8 and this will be 12 and the decimal should be here. So 1.5 multiplied by 8 will be equals to 12. Now this is not a standard form, so we have to convert it to make it a standard form. अगर आप अपना फाइनल आंसर ये लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. That is why what we will do, we will shift the decimal towards 1 unit towards the left side. So if we are moving it towards the left side, इसका मतलब ये है कि हमें +1 यहाँ करना होगा. So your final answer will be equals to 1.2 multiplied by 10 raised to power 21. So indices में ये बात ये याद रखना है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जब आपका डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर आप नेगेटिव करेंगे जितने यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, और अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर आप पॉजिटिव करेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Let's move on to the question number 14. Now question number 14, the length of a path is measured as 62 meters. Correct to nearest meter. Now nearest meter is a very important point. Write down the upper bound. Now nearest meter का मतलब क्या है? Nearest meter का मतलब ये है कि आपने 1/2 जो भी यहाँ पे होगा उसको डिवाइड बाय 2 करके उसको ऐड कर लेंगे. लाइक 62 में आप अपर और लोअर बाउंड के लिए ±1/2 करेंगे. तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपर बाउंड चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, 62 +
1/2 करेंगे, so this will be equal to 62.5. So 62.5 will be the final answer. अगर इसी क्वेश्चन में लोअर बाउंड फाइंड करना होता तो हम लिखते 62 माइनस 1/2, तो 61.5। ये आपके पास क्या होता, ये आपके पास लोअर बाउंड होता है। अब इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, बट जैसा आपको पता होना चाहिए कि अगर इसी क्वेश्चन में आपने लोअर बाउंड फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड होगा, और अपर बाउंड के लिए आपने दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट बी। द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट इज 80 ग्राम्स, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम्स। अब करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम्स का मतलब ये है, लेट मी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 80 ग्राम्स है, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 5। तो 5 का मतलब ये है कि 80 प्लस माइनस 5 करना है आपने। अब प्लस 5 करेंगे तो ये आपके पास अपर बाउंड है, और माइनस 5 करेंगे तो ये आपके पास लोअर बाउंड है। तो -5 में दिस विल बी इक्वल्स टू 75। तो आपने एक चीज़ देखी है कि नियरेस्ट 10 ग्राम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेट द लोअर बाउंड, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स। सो लोअर बाउंड आपको पता है कि लोअर बाउंड आपके पास ये है, सो इसको अब यूज़ करेंगे हम फॉर 5 बैग्स। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 will be the final answer. 75 multiply by 5 करें, 5 5 is 25, 7 5 is 35 and 37. So the final answer will be equals to 375. So that is it for today. So today we have discussed from question number 1 to question number 14. Question number 14, and this is paper May-June 2021 पेपर 1-2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो टुमारो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। थैंक यू।